हम जज नहीं कर सकते हैं. यू कांट जज. नॉन ऑफ अस इज इन दैट पोजिशन. वी कांट जज कि उसने सही काम किया कि गलत काम किया. वो कुछ भी करे, उसको सब कुछ अलाउड है करना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट gets resolved through environmental degradation and development. Most of the times, write this in your answer, most of the times it is environment that gets sacrificed at the altar of development. अपनी पावर को पहचानो आप, क्या पावर है. He can't ask you, मिनिस्टर है, होता कौन है का मतलब ये नहीं कि आप लड़ने लग जाओगे उस पर्सन से. You have to all work in harmony with each other, right? But understand that nobody can, let's say, point a gun to your head and say do something wrong. This will involve two aspects. We can allow them, but only just inside the border so that they don't face any immediate harm. Congratulations on clearing UPSC 2024. Watching you succeed is really inspiring. Thanks. I have been in your shoes. I know how overwhelming the start feels. Exactly. There's so much to cover, I don't even know where to begin. I felt the same. That's why I joined the GS Foundation course by Vision Eyes, which offers structured classes, expert faculty, and regular revision. It gave me clarity and momentum. And you stayed consistent with it? Yes, I followed the complete roadmap offered by the course. If you're aiming for 2026, start with this course. It offers you holistic coverage with every stage of the exam covered seamlessly. This is where your journey will truly begin. Got it. I will definitely explore the course. Where can I find the details? Just visit their website or call on the given numbers. Good evening, everybody. I'll be taking up discussion of case studies. We are already, I can see on your faces also, we are already stretched beyond the available time. I'll discuss case studies as quickly as I can. I would have liked to take more amount of time, but because it has been, you have been here since morning, I think 8 o'clock, and we are already beyond the available time. मेरा सेशन 4 बजे शुरू होना था, 4:30 बजे शुरू होना था. It is already more than 5:30, and इसके बाद अभी स्मृति मैम का सेशन और बचा है, तो इसीलिए I will have to be quick. Fine? चलो, I'll be as pinpointed as I can in our discussions, which also means that I'll read the case studies rather quickly, meaning I will assume that you have already looked at the paper. I will not have time to explain the question as such. ठीक है? चलो, with this, let's begin our discussion on case studies. One, I'm assuming none of you have written the exam because otherwise अभी तो exam चल रहा है. जो exam दे रहे हैं वो तो नहीं आएंगे session के अंदर. How do you write answers to case studies? Good answers and quick answers. दोनों चीज़ें हैं, हमको दोनों बैलेंस करने हैं. अच्छा आंसर लिखने में अगर आपको आधा घंटा लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका. हमको जल्दी भी लिखना है और अच्छा आंसर भी लिखना है. The best way to prepare for
this paper, entire paper, and goes for case studies as well. The best way to prepare is when you look at previous year questions, and for you people, this is now a previous year question. Who will be writing exam next or so on and so forth. This is the previous year questions. Please look at these case studies. UPSC has, in my opinion, kind of perfected, or they have enhanced the quality of questions a lot in last few years. So अब जो case study है वो काफ़ी अच्छी quality की आती हैं. Dilemmas बहुत अच्छे उसमें से अंदर present कर रखा होता है, और बहुत ही critical kind of dilemma होता है, which is not so easy to answer or resolve. One, and the kind of questions that they ask in these cases, as in case and the question that they ask, questions भी अब थोड़े अच्छे, as in they are moving beyond simply asking कि explain the course of action, थोड़ा सा उसके beyond भी जाते हैं. Still अभी भी हम देखेंगे लगभग हर question के अंदर वो है कि what are the options available to you, dilemmas which are there, and the course of action, but they are trying to go beyond, not completely in all question, but they try to go beyond this part also. ठीक है, we'll try to learn how to write good answers as fast as possible in our case studies part. ये हमारा purpose है. Purpose is not to tell you merely कि क्या क्या आंसर में को लिखना है, अच्छा आंसर जल्दी कैसे लिखें. चलो, let's start with our discussion. First case, really good case. Vijay was a deputy commissioner in a remote district of hilly northern state of the country for last 2 years. In the month of August, heavy rains lashed the complete state, followed by a cloudburst in upper reaches of the said district. Think of whatever is happening in Himachal or Uttarakhand right now. So Vijay was a deputy commissioner of a remote district of hilly state, and in month of August, heavy rains have lashed the complete state, followed by a cloudburst in upper reaches of the said district. The damage was very heavy in the complete state, especially in the affected district. The complete road network and telecommunication were disrupted, and the buildings were damaged extensively. Complete road network has been disrupted, communication has been disrupted, and the buildings were damaged extensively. People's houses have been destroyed, and they were forced to stay in open. More than 200 people have been killed, and about 5,000 were badly injured. The civil administration under Vijay got activated and started conducting rescue and relief operations. Temporary shelter camps and hospitals were established to provide shelter and medical facilities to homeless and injured people. Helicopter services were pressed in for evacuating sick and old people from remote areas. Vijay got a message from his hometown in Kerala that his mother was seriously sick. After 2 days, he received the unfortunate message that his mother has expired. Vijay has no close relative except one elder sister who was a US citizen and staying there for last several years. In the meantime, situation in the affected district deteriorated further due to resumption of heavy rains and after a gap of 5 days. At the same time, continuous messages were coming in on his mobile from his hometown to reach at the earliest for performing last rites of his mother. I'm sure case सबको समझ में आ गया होगा. What are the options available with Vijay? Ethical dilemma that he is facing. Critically evaluate each of these options identified by Vijay. Which option do you think would be most appropriate for Vijay to adopt and why? तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं कैसे हम इनका आंसर लिखेंगे. First, introduction part. In intro to your answers, I've said this in case study session also. In intro to our answers, what should be writing? We should be writing about, for example, is this thing reflective of some generic conflict that people at workplace are facing? या तो आप कोई जेनरिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लिखो, या फिर अगर आपको कुछ रियल इवेंट पता है इससे रिलेटेड आप उसके बारे में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अ वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट, देर आर मेनी इवेंट्स ऑफ सच सॉर्ट, बट हाँ, वन गुड इंट्रोडक्शन कैन बी यू राइट दैट सिविल सर्वेंट्स continuously face a conflict between their personal duties and their professional responsibilities. In most cases, these conflicts are relatively easily resolvable, as there would be ethical guidelines. I'll repeat. Civil servants continuously face conflicts between personal duties and professional responsibilities. And in most cases, these conflicts are relatively easily resolvable as there are ethical guidelines of action. However, in some cases, these conflicts become extreme, where no one either personal or professional duty can be relatively easily preferred. This is one such case.
where the conflict is too extreme or too adverse for it to be resolved in a relatively easier manner using some rules and regulations only. यहाँ पे कोई rule regulation वगैरह नहीं चलेगा, because on one case you have a responsibility as son to perform last rites of your mother, and on other case you have responsibility towards the people as district magistrate, as district commissioner, कि आपको भाई उनको disaster में rescue करना है. So this is a case of extreme. So that is one way of writing introduction to this particular case. आप एक general देखो कि इधर लिख दो कि क्या conflict यहाँ पे आपको face हो रहा है. तो ultimately conflict is between personal duty and professional responsibility. If a case was conflict between a personal desire and professional responsibility, it would get resolved easily in favor of professional responsibility. अगर personal desire है versus professional responsibility है तो easily आप उसको duty के उसके में resolve कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक आपकी personal duty है और वो भी core very important duty है, तो यहाँ पे resolve करना इतना मुश्किल नहीं है. यहाँ पे कोई guideline नहीं है कि आप यहाँ पे क्या act करोगे. There are guidelines otherwise to help you choose, help you get over the dilemma. But in this case, there is no such guideline with that can be framed कि ऐसे में आप क्या करोगे. One way of writing the introduction. Another way, आप किसी event से relate कर सकते हो. For example, an event that comes to my mind very close to this particular event is that आप लिख सकते हो सचिन तेंदुलकर का example. So in 1999 World Cup, अब you people would not born at that point, most of you would not born. 99 World Cup, India was on verge of elimination from the Cricket World Cup. तो India बाहर होने वाली थी, and during that point, Sachin Tendulkar's father passed away. तुम्हारी जनरेशन जो विराट कोहली को पूछती है, तो विराट कोहली's father passed away. Yes, Sachin Tendulkar's father passed away during India's World Cup. तो अभी जो फैन क्लब बने रहते हैं, तो अगेन समय हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज़ में डिवेट नहीं करेंगे. Sachin Tendulkar's greatness, as in it goes far beyond words, as in it goes far beyond statistics. His father passed away in 1999 World Cup when India was on verge of elimination. He came back, performed the last rites of his fathers, went back within 3 days and played for the country, ensured that we were not eliminated. During his absence, India lost that match. कीनिया के अगेंस्ट हमारा कुछ मैच था, हमने वो मैच हार भी गए थे. देन ही वेंट बैक, ही केम बैक एज इन विद इन 3 days आफ्टर परफॉर्मिंग लास्ट राइट्स एंड मेड श्योर दैट इंडिया वाज एबल टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज. अब इन दिस केस यहाँ पे पर्सन एक सिविल सर्वेंट है, वहाँ पे वो क्रिकेटर है, लेकिन हाँ बात ये ना कि सबकी अपनी अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वर्सेज एक वेरी पर्सनल ड्यूटी है आपकी. तो यू कैन गिव दैट इंट्रोडक्शन, दैट वुड बी अ वेरी सूटेबल इंट्रोडक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस. और एक इंट्रोडक्शन और है जो कि आप लिखना नहीं, बस एग्जाम्पल के तौर पर आई एम जस्ट गिविंग यू एज पार्ट ऑफ एग्जाम्पल. बॉर्डर मूवी देखी है? बॉर्डर अगेन तुम्हारे हिसाब से काफ़ी पुरानी मूवी हो चुकी है बॉर्डर. तो बॉर्डर मूवी में एक कैरेक्टर है, मथुरा दास का कैरेक्टर है. सो द कंट्री इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, कंट्री इज गोइंग थ्रू अ वॉर राइट नाउ. पाकिस्तानीज आर कमिंग एंड अटैकिंग ऑन आवर बॉर्डर. वी हैव वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स एट दैट चेक पोस्ट, एंड देयर इज अ पर्सन whose wife is has cancer and is on her deathbed. So as a person, obviously he has a desire to go back to his wife and attend to his wife. Obviously बात है. But then as a professional, as a soldier, it is also a responsibility to protect the nation in its need of war. So what do you do in this particular case? Now he's asked for leave from the army headquarters. Army headquarters has been denying his leave because of the duty that he has to perform. But eventually they grant him the leave also, and then he's supposed to go back to his family. He goes back, अब फिर वो बाकी मूवी का पार्ट आ जाता है. But the point is, I'm just letting you know the dilemma that exists. There is a grave dilemma between your professional duty and personal responsibility. बहुत dilemma यहाँ पे चीज़ है. Important aspect क्या है? Important aspect ये है कि इस dilemma को resolve करने के लिए हमारे पास कुछ straight forward approach नहीं होती है कि हम कैसे इसको resolve कर दें. More importantly, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपको आंसर में ये चीज लिखनी होगी, ये बॉर्डर वाला मूवी का मत लिखना, बट आप ऐसे लिख सकते हो, अ सोल्जर ऑन बॉर्डर में फेस अ ग्रेव पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टाइम्स ऑफ वॉर. सो शुड ही कम बैक और शुड नॉट, शुड ही स्टे एंड परफॉर्म हिज नेशनल ड्यूटी एट दैट पॉइंट. ऐसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो. सबको समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखेंगे हम आंसर के अंदर. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज this is a problem that a person faces, and we as external agents are in no position to be judgmental of his resolution. ये लिखना पड़ेगा आपको आंसर में. हम जज नहीं कर सकते हैं. You can't judge. None of us is in that position. We can't judge कि उसने सही काम किया कि गलत काम किया. वो कुछ भी करे उसको सब कुछ अलाउड है करना. वो अपनी मदर की लास्ट राइट परफॉर्म करने जाए, वो वहां पे रुके, उसको सब कुछ अलाउड है करना. हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं. लिखना पड़ेगा आपको आंसर के अंदर. इन इंट्रोडक्शन सेट दिस स्टोन, राइट दैट इट वुड बी रॉन्ग ऑफ अस टू जज अ पर्सन's एक्शन बेस्ड ऑन आवर मॉरल असेसमेंट.
Why? Because it is the person that is in this situation and is facing this critical dilemma. Given this grave situation, these are the following options available with Vijay. Is this clear to everybody? कैसे हमको स्टार्ट करना है, आंसर समझ में आ गया? जजमेंटल हमको आगे भी नहीं होना है. Which option do you think would be most appropriate वगैरह आप बताओगे कि क्या कर सकता है, लेकिन अगेन आप एम्फेसाइज करोगे वहां पे कि I will not judge if he chooses the other action. Clear to everyone? ये लिखना आंसर में इस चीज को. This is what shows maturity on your part. That you are not merely a person who has written options, merits, demerits as in pros and cons, and अब आप लिख देते हो कि भाई क्या चीज करनी चाहिए. You have to reflect that you are better than, more mature than others who are writing the answer. It's a relative assessment of everybody. You have to prove that you are better than others. And this sentence proves that you are better than others in the sense you recognize that वो एक person की unique problem है. वो उस situation में आप नहीं हो, तो आप बाहर से बैठे उसको जज नहीं कर सकते हो. आप ज्ञान नहीं दे सकते हो कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? ओके, क्या ऑप्शन है विजय के पास? गिवन दिस difficult problem, given this challenging situation, the options with Vijay are as follows. Prefer or prioritize rescue operations, prioritize rescue operation and attend to his personal responsibility as soon as he can. देखो लिखने का तरीका है. अगर आपने ये लिख दिया कि प्रायोरिटाइज रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड डोंट गो टू हिज फैमिली वर्सेस प्रायोरिटाइज रेस्क्यू ऑपरेशन एंड अटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सून एज ही कैन. अब एज सून एज ही कैन में आपने बता दिया ना कि भैया जैसे ही मैं कर सकता हूं उस समय मैं करूंगा. लिखने का तरीका है. दिस इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स मैच्योरिटी इन पार्ट ऑफ आंसर. ठीक है, ओके. दिस इज वन ऑप्शन, प्रायोरिटाइज रेस्क्यू ऑपरेशंस. सेकंड इज perform last rites with full क्या लिखा था यहाँ पे? perform last, okay, perform last rites commensurate with cultural requirements, cultural or religious requirements. And the third is delegate the duty to some competent entity for 2 to 3 days. These are the options that Vijay basically has. Clear है? या तो आप रुक जाओगे या आप जाओगे या फिर आप 2 से 3 दिन के लिए डेलीगेट कर दोगे. आपको बेसिकली ये काम करना है. क्या ऑप्शन लेंगे हम? व्हाट ऑप्शन आर वी गोइंग टू चूज? क्या लेना चाहिए बताओ? अगेन वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि हमको क्या ऑप्शन चूज करना है. ऑल ऑप्शंस आर राइट ऑप्शंस, राइट? अगर वो विजय साहब रुकना चाहते हैं वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल परफॉर्म करने के लिए, गुड, पीपल विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट, बट अगेन ही सैक्रिफाइसिंग हिज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट केस. इफ ही वांट्स टू गो बैक दैट्स ऑल्सो फाइन, बट देन ही मस्ट हैव सम प्लान ऑफ एक्शन, सम कुछ प्लान भी होना चाहिए कि भाई किस तरीके से वो डेलीगेट करेंगे. या फिर वो 2-3 दिन के लिए देखें भाई आई एम गोइंग टू सेट अप ऑल दीज टास्क फॉर नेक्स्ट 2-3 days एंड दीज आर गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली, देन आई विल बी बैक विद इन दीज 3 days एंड हेंस आई कैन रिज्यूम द रेस्क्यू ऑपरेशंस. दीज आर 3 ऑप्शन दैट विजय हैज इन दिस पर्टिकुलर केस. इज इट क्लियर? सो ऑप्शंस अवेलेबल. Ethical dilemmas being faced by Vijay. This is the more important question. What are the ethical dilemmas that he is facing? Ethical dilemmas. अब there are many ethical dilemmas, but how do you write? कैसे present कर सकते हैं हम इसको? Again, a better ways. One is आप ethical dilemma लिख सकते हो that it is, let's say, honesty versus integrity, objectivity, personal versus professional. आप ऐसे लिख सकते हो. That is one way of presenting ethical dilemma. A better way can be, in this particular case, a better way can be to present ethical dilemma is क्या dilemma है? जैसे आपने लिखना है, मान लेते हैं पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल आपको लिखना है. पर्सनल ड्यूटी वर्सेस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अगर ये लिखना है तो वन वे ऑफ राइटिंग दिस डायलेमा इज दैट यू कैन राइट
how does he delegate the professional duty to someone else? How does he delegate the duty? Question mark. How does he ensure? How does he reach his hometown and come back on time, given that transportation is difficult? How does he ensure that no mishappening takes place in his absence? Would he be held responsible for any incident that takes place in his absence? I'll read out, समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे खुद ही समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, मैं तुमको पढ़ के बता देता हूँ. हाँ सुमत. Dilemmas that he is facing. Write the dilemmas in question form. That is what I am trying to portray. एग्जाम में जब आंसर लिख रहे हो तो इस तरीके से आंसर लिखो, इन क्वेश्चन फॉर्म. Dilemmas. Dilemma is I am thinking what would happen, what am I going to do, what may not happen. That is what is affecting my decision making right now. I am grappling with all these dimensions at the same time. I have to go back. To whom do I delegate my responsibility? Is there a competent person or not? How will I go back? I am going to use resources that are meant for rescue of people. मैं खुद हेलीकॉप्टर के अंदर जाऊंगा, कहीं पे अगर मेरे को जाना होगा तो यहाँ से किसी स्टेशन तक जाऊंगा, एयरपोर्ट तक जाऊंगा, वहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा. What kind of resources am I going to use if I have to go back? Because transportation possible नहीं है यहाँ पे. How am I going to make sure that no untoward incidents happen in my absence? And if something happens, will I be held responsible for that or not? How will I settle my, how will I resolve that crisis of conscience? अगर मैं चला जाऊंगा, आप रिवर्स में देखो इस चीज को. अभी तो लग रहा है कि चला जाना चाहिए मेरे को क्योंकि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा. लेकिन अगर 2 दिन में कुछ हो जाता है तो मेरी कॉन्शियस में मेरे को चोट मेरे को खुद आएगी. एज इन आई वुड बी थिंकिंग दैट am I responsible for this thing or not? As in, it's not just about responsibility, accountability वाली बात. I would myself think that maybe I could have stayed, I should have stayed. My presence would have been far more beneficial. Let me be heartless for a moment. My presence would have been far more beneficial for the alive as compared to the diseased. The diseased is my mother, but my presence is required more for those who are alive right now, those who could have been rescued. So then I would be grappling with that crisis of conscience. So that is the dilemma that I am facing. So write the dilemmas in these questions from the dilemma that that Vijay is facing in this case. So don't write in that conventional form all the time कि भैया dilemma is honesty versus integrity, dilemma is personal versus professional. इस तरीके से आप dilemma लिख सकते हो और ये better तरीका है मेरे ख्याल से dilemma लिखने का. In question form, that what would happen if this is going to happen. So इस type से हम लिखेंगे dilemmas. ठीक है, समझ में आया सबको? That is the dilemma that Rajesh is facing. Critically evaluate and examine each of these options identified by Vijay. इन सब का evaluation करेंगे, इनके merit demerit हमको लिखने हैं. Prioritize rescue. I'm sure everybody can write merit and demerit of this particular thing. The merit is that it reflects professional responsibility. Merit में ये मत लिखना that if I am let's say staying, that if I am staying तो people will be rescued. ये नहीं लिखेंगे merit में. मैं stay कर रहा हूँ जिससे लोग बचे रहें, जिससे मैं rescue operation में contribute कर सकूँ. ये merit नहीं है इस चीज़ की. Merit क्या है? If I am staying, then this reflects my commitment to professional responsibility. I will be able to perform my duties which should result in people being rescued.
सबको समझ में आया क्या? मेरिट हम कैसे लिखेंगे? मेरिट इज दैट इफ आई एम प्रायोरिटाइजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन माई कमिटमेंट टू माई ड्यूटी. ये इसकी मेरिट है. डीमेरिट क्या है? दैट एज अ सन आई वुड हैव फेल्ड इन माई ड्यूटीज टू परफॉर्म लास्ट राइट्स ऑफ माई मदर. ये इसकी डीमेरिट है. डीमेरिट में ये मत लिखना, डीमेरिट ये है कि मैं नहीं जा पाया. डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या कर दिया, इसका मतलब डीमेरिट में क्या नहीं हो पाए, क्या नहीं किया, ये नहीं डीमेरिट है. डीमेरिट इज दैट इट आई एम अनेबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज एज अ सन टू परफॉर्म लास्ट राइट्स फॉर माई मदर. इट इज क्लियर? दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज दीज ऑप्शंस. Second option, perform last rite commensurate with the cultural or religious, in complete religious manner. Merit is an important performance, in an important duty of every son or every child is to perform the last rites of their parents. A very important duty, and as a result of that, why I have been given values, I have grown on to become quote unquote some big person, why should I not perform the last rites of the mother? So merit is that I am able to uphold my duties as a son. But the demerit in this case would be that some untoward incidents may happen. My presence in rescue room would be very, very important. And if I am not present, maybe the disaster rescue operations may fail or may get jeopardized for next 2 or 3 days till the time I'm not present over there. That becomes the demerit of this particular option. For 2 or 3 days, अगर आप जाते हो delegate to somebody or to some competent entity, the merit is I would have minimized my absence, and as a result, I would have shown leadership in delegating responsibilities when required. Minimize my absence, show leadership that I can delegate my responsibilities when required. Preparedness एक important part है ना भाई. You have to be prepared for anything that can go wrong, and anything that can go wrong के अंदर your personal life may also go wrong at some point. It's not just that I have to be prepared for disaster. अगर इस टाइम मान लेते हैं मुख्यमंत्री को कुछ हो जाता है, मे बी आई मे बी रिक्वायर्ड एट दैट टू टेंड टू हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिम एज वेल. मे बी समथिंग अनटुवर्ड्स हैपन समवेयर एल्स, एज इन जो कि प्रोफेशनल ड्यूटी का पार्ट है. पॉइंट इज मेरे को सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्क. So if I am able to delegate my responsibility to somebody else during such times, it shows my preparedness to handle different kinds of risk. ये इसकी मेरिट है. Demerit क्या है? That it creates uncertainty. It creates crisis of conscience. It creates a situation where there may be lack of accountability. That if something happens in these 3 days when I am not present, who will be held accountable? Me or the person to whom duty was delegated to? That becomes the demerit of this particular thing. ठीक है? Clear है? That is how you analyze these options. Finally, which option do you think would be most appropriate for Vijay to adopt and why? यहाँ पे emphasize करेंगे जैसे मैंने पहले बोला था. This is a situation where it's not easy to resolve the dilemma. And whatever option Vijay takes, all those options would be very personal to him, may be justified using some means. पहले part में आप लिख दो, पहले point में आप लिख दो कि Vijay is completely free to take any of these actions. We will not be judgmental कि विजय ने सही क्या गलत किया. Then उसके बाद लिखो according to me. आपको पूछा गया कि भी क्या ऑप्शन लेना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मे बी, किसी भी को भी पिक करो, उसको जस्टिफाई कर दो, किसी को भी पिक करो. यू वांट टू राइट दैट विजय शुड स्टे, आपको ये लिखना है तो आप लिख दो दैट अकॉर्डिंग टू मी विजय, द बेस्ट ऑप्शन वुड बी इफ विजय डिसाइड्स टू स्टे, बिकॉज यूटिलिटेरियन कैलकुलेशन आर इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. मोर नंबर ऑफ लाइव्स विल बी सेव्ड इफ विजय is present over here performing his professional duties. So therefore, according to utilitarian principle, Vijay's presence is required, he must stay. That would be a desirable course of action. तो आप कोई भी course of action लिख रहे हो, आप उसको justify कर सकते हो, लेकिन आपको justify करना पड़ेगा उसको कि आप क्यों बोल रहे हो that this is a desirable course of action. You can write, according to me, Vijay should perform his duties, can delegate the responsibility for 3 days, and hence come back as soon as possible and join his duties back. By doing this, he would have performed his duties as son also by minimizing his absence. तो आप इस पॉइंट को भी जस्टिफाई कर सकते हो. पॉइंट इज पिक अप एनी ऑप्शन, यू हैव टू जस्टिफाई दैट ऑप्शन कि भाई क्यों आप चाहते हो कि विजय काम करे. आपसे ये तो पूछा गया, इनमें से आपसे पूछा गया विच ऑप्शन डू यू थिंक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. मोस्ट अप्रोप्रिएट है भाई आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और अप्रोप्रिएट हो सकता है. कोर्स ऑफ एक्शन डज नॉट मैटर, याद रखना इस चीज को. The course of action that you choose does not matter.
एग्जामिनर को लगता है आपको पता है कि क्या सही करना चाहिए इसके अंदर? एग्जामिनर कौन होता है आपको जज करने वाला भाई? जो प्रोफेसर साहब कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेक करते करते उनके घर के अंदर कुछ हो जाए, फिर नहीं होना चाहिए. Get this point or not? Nobody can judge. Understand this thing. There is a person who is in a situation, no one else can judge that person's action. You are giving your opinion that according to you, what may have been a preferable course of action. Is this clear to every? सबको समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को emphasize करना बार बार, that it would be wrong for us as external entities to judge Vijay's action. Given the complex dilemma that he is facing, he should be able to take decision, and whatever decision he takes, we should be respectful of that decision. In our opinion, Vijay should stay because his presence would be necessary to carry out rescue operations and the grave disaster that the state is facing. According to me, this should be the option. Or you want to write, according to me, Vijay should take immediate leave, perform last rites, come back within 3 days. During this time, he can delegate responsibilities to somebody else from the state, some competent entity, for example, some district commissioner from neighboring district or some other district. Before leaving, he must prepare an exact plan. He must leave an emergency contact number for himself so that if there is some requirement, he can be contacted. He must make sure that he comes back within 3 days, as in as less time as possible, to take back his responsibilities. Clear to everybody? सबको समझ में आ गया? ऐसे हम आंसर लिखेंगे इसका. जो भी आपने कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया है, उसके बाद लास्ट में लिखो, by doing this, he would have demonstrated courage, leadership, commitment to responsibilities, personal and professional. Is this clear? Last line हमको ये लिखनी है. By doing this, he would have demonstrated all these values. Clear है? सबको समझ में आ गया? एक और चीज लिख देना यहाँ पे कि whatever he decision he takes, he must transparently disclose that decision. भाई डिसीजन अगर वो ले रहा है कुछ, तो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोज भी करे, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, पीपल को बता देना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है. पीपल, जनता ढूंढ रही है कमिश्नर साहब कहाँ चले गए, लोग बोल रहे हैं कमिश्नर छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं. अगर बोल दिए छुट्टी के ऊपर गए हैं तो फिर गलत मैसेज चला जाएगा ना. इसलिए आपको पहले ही ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना है दैट देयर इज अ पर्सनल इमरजेंसी एंड यू हैव गॉन देयर टू अटेंड दैट इमरजेंसी. सो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट भी लिख देना कि व्हाट इज द ऑप्शन दैट यू शुड टेक. यू शुड ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर व्हाटएवर वेयरएवर इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं. In line with the directive principles of state policy enshrined in the Indian Constitution, government has constitutional obligation to ensure basic needs, roti kapda makan, for the underprivileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed clearing of portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker section of the society. The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with age-old trees, medicinal plants and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate microclimate and rainfall, provide habitat for wildlife, support soil fertility, and prevent land and soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities. In spite of ecological and social cost, the administration argues in the favor of said proposals by highlighting that this very initiative addresses fundamental human rights as critical welfare priority. Besides, it fulfills government's duty to uplift and empower the poor through inclusive housing development. Further, these forests have become unsafe due to wild animal threats and recurring human-wildlife conflicts. Lastly, clearing forest zones may help to curb antisocial elements allegedly using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order. So this case is basically about, introduction में लिखेंगे, the case is about, you can use the word sustainable development, इसके ऊपर लिख सकते हो. Or the case is about a perennial conflict between sustainability versus development, or environmental protection versus development, whatever you want to write. The case is about this particular conflict, sustainability or environmental protection versus developmental needs of the society. रोटी कपड़ा मकान लिखा हुआ है, so constitutional obligation है versus एक environmental need है. When you read this case, you will realize कि भाई केस के अंदर उन्होंने दोनों चीजें दे रखी हैं. They have given कि भाई जो फॉरेस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेंसिटिव है,
एज ओल्ड ट्रीज हैं, मेडिसिनल प्लांट्स है, बायोडाइवर्सिटी है, रेनफॉल, ऑल दीज थिंग्स हैं. So this is something that goes in favor of protecting the forest or environment versus ये भी दिया हुआ है, वन सरकार की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ड्यूटी है सरकार की. इट इज ड्यूटी टू अपलिफ्ट एंड एम्पावर पुअर थ्रू इंक्लूसिव हाउसिंग डेवलपमेंट. Plus there are other aspects also. Forest areas have become unsafe, wild animal threats हैं, recurring human wildlife conflict हैं, plus it may help curbing antisocial elements हैं. तो in your case both things are given as to why should we protect versus why should we, let's say, clear these forests. दोनों चीजें आपको दे रखी हैं. So the case already has, the question already has the main points that you're going to write in your answer. So introduction. The case is about a perennial conflict between protection of environment versus developmental responsibilities of the government. That is the case basic highlight. Part A, एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद पार्ट ए लिखो. गिव अ सब हेडिंग, एथिकल जस्टिफिकेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऐसे सब हेडिंग देनी है, डिफॉरेस्टेशन. Most of the times the conflict between environmental protection versus development gets resolved through environmental degradation and development. Most of the times, I write this in your answer, most of the times it is environment that gets sacrificed at the altar of development. Developmental priorities, developmental goals are prioritized and environmental may be sacrificed. सबको समझ में आ रहा है कैसे हम आंसर लिखेंगे? राइट, ये टर्म्स, ये लैंग्वेज है, इसी के थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे. Most of the times in this conflict between environmental protection versus development, it is environment that gets sacrificed at the altar of development. Given that the consciousness regarding environmental protection has increased in recent years, we have begun to question that should environment always be sacrificed? We have begun to question that should environment always be sacrificed? In this regard, now we seek proper justification of in what cases is environmental degradation justified versus when it is not. Now we seek proper justification of as in what cases is environmental degradation justified and when is it not. सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमको आंसर प्रेजेंट करना है? Ethical justification. Can deforestation be ethically justified in pursuit of social welfare objectives like housing for the homeless? Ethical justification. यहां पे हम प्रिंसिपल देखेंगे कब कब हम जस्टिफाई कर सकते हैं, किन केस में जस्टिफाई कर सकते हैं. Only as a matter of last resort. Only after exhaustion of alternates and evaluation of costs and damages. Only when benefits outweigh the costs. Only when a proper executable plan for rehabilitation, restoration, compensation,
has been put in place, has been put in place. Within principle of minimal harm. So you have to write under what conditions can it be ethically justified. हमको ये लिखना है. Can it be? तो basically आपसे पूछ रहा है कि कब justify कर सकते हैं हम इस चीज को. So what are the principles that you're going to assess कि भैया इन conditions में environmental degradation becomes justified in pursuit of social welfare objectives. When would it be justifiable? When it is only as a matter of last resort. Everything else you should have exhausted. और कोई तरीका नहीं होना चाहिए, as a matter of last resort आपको करना है. No other option is available. Only after you have exhausted all the alternates and you have evaluated the costs and damages. And then when the benefits outweigh the costs. And when you have a proper plan, an executable plan to ensure that any kind of community that is going to be displaced is rehabilitated. There is proper compensation for them. They are going to get resettled. And there is some afforestation that you're going to pursue. जो आपने forest को निकाला है उसको आप afforest भी करोगे. Only when you have a proper executable plan for this can this thing be justified. Given the principle of minimal harm. Minimal harm समझ रहे हो ना क्या है? That minimal cost होनी चाहिए. Cost तो है obviously है, cost है, but हाँ आपको cost को minimize रखना है. You can't be clearing let's say entire forest. जितना required है आपको उतना ही clear करना पड़ेगा. You can't be let's say uprooting the entire ecosystem. जितना required है exactly उतना ही रखिए, उससे ऊपर आप नहीं रखिए. Principle of minimal harm के तहत. Not as in not merely the benefits, look at the harm. Harm has to be minimized. Within that अगर ये चीज़ है तब आप ethical justify कर सकते हो. Otherwise there is no justification for this. So again in the introduction you have to emphasize this thing जो मैंने आपको पहले बोला था. That more often than not, the debate between or the conflict between environmental protection versus economical development, the need of environment gets sacrificed. Given that we have been gaining consciousness about these issues, now we seek ethical justification. So therefore now, if we have to take decision in favor of environmental degradation or environmental destruction, it must comply with the following principles. That there were no other alternates. All other alternates were exhausted and we have evaluated the costs and damages with this particular course of action. If anybody is going to be harmed, anybody is going to be resettled, there is a proper plan, executable plan for the rehabilitation, resettlement and afforestation. And we follow principle of minimum harm in this case. At least what is required, only that is what is being destroyed, nothing more than that. If these conditions are met, only then we can ethically justify deforestation or environmental degradation for economical development. तो पहले पार्ट में हम ये लिखेंगे, ठीक है? First, what are socio-economic, administrative and ethical challenges in balancing environmental conservation with human development? Now, I'll not give an answer to this thing because I'm sure you all can write an answer to this thing. But the point is, I will tell you about the structure. Part B, option B. What are socio-economic, administrative, ethical challenges? This is more about, देखो 20 नंबर की केस स्टडी है. दिस इज मोर अबाउट यू टेलिंग द एग्जामिनर दैट यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस. सो पार्ट बी में लिखना ऐसे, पार्ट बी का पॉइंट 1 सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, 2-3 पॉइंट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, मत करो यार, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस 2-3 पॉइंट्स. एंड देन थर्ड एथिकल चैलेंजेस. दिस इज मोर अबाउट, ये जो क्वेश्चन है दिस इज मोर अबाउट, देखो जो एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की केस स्टडी है ना, लगभग हर साल है. मेरे ख्याल से तो कोई भी साल ऐसा नहीं है जब भी केस स्टडी नहीं पूछी कि एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव बीन एबल टू राइट आंसर टू वेरी क्विकली. जो उन लोगों ने एग्जाम दिया है, मतलब जो ऑनलाइन देखेंगे बाद में, उनको इसका आंसर बहुत फास्ट लिखना. इसमें कोई आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को. केस का कोर वही है, बस किरदार बदल गए हैं यहाँ पे, और कुछ. देयर इज नथिंग different, there is nothing new in this particular case. So you should know about क्या है सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्या है इन बैलेंसिंग एनवायरमेंट कंजर्वेशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट. क्या सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं बताओ.
जल्दी बोलो. हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट चैलेंज है, सोशो इकोनॉमिक चैलेंज है. कॉम्पनसेशन चैलेंज है, रीसेटलमेंट चैलेंज सोशो इकोनॉमिक चैलेंज है. हाँ, लाइवलीहुड है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक चैलेंज. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्या है? डिफिकल्ट टू रिलोकेट है, डिफिकल्ट टू कीप एन अकाउंट ऑफ द लॉसेस, डिफिकल्ट टू कीप एन अकाउंट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू गेट बेनिफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है. डिफिकल्ट टू परफॉर्म environmental impact assessment and social impact assessment, administrative challenge है यहाँ पे. Difficulty because there are multiple variables to perform EIA and SIA, that poses administrative difficulty. There is a challenge of it being challenged in the court. If you are able to perform some action तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा. You have to justify that in court. Administrative challenge है वहाँ पे, आपको जाके पेशगी देनी पड़ेगी भाई why did you take a particular decision. Administrative challenge है. Ethical challenge क्या है? Land alienation है. Land alienation again. Who are the people who are beggars? Mostly beggars कौन होते हैं? Why do people end up as beggars? Does unemployment cause people to become beggars? It's not unemployment that causes people to become beggars. It is that you have been uprooted from your source, from your home. You have been uprooted, you have been displaced, and then you end up coming over here. अगर आप अपने विलेज में हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो सोसाइटी आपका ख्याल रखेगी ही रखेगी. Does not matter आप किस सेक्शन से आते हो, because you are still at home, you will still be taken care of. But if you have been uprooted, that means there is nobody else to take care for you. So these are the people who end up as beggars. Ethical challenges. Land alienation becomes an ethical challenge. Resolution of dilemma. It becomes ethical challenge. ये dilemma कैसे resolve होता है? थोड़ा personal नहीं होगा ये चीज़. I am a more environmentally conscious person versus you are a more developmentally conscious person. तो मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा वर्सेस आप कैसे रिजॉल्व करोगे, दोनों अलग नहीं रिजॉल्व करेंगे. एथिकल चैलेंज है यहाँ पे. दैट हाउ डज द डायलेमा गेट रिजॉल्व डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ इंक्लिनेशन द पर्सन हैज टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट. सो एडमिनिस्ट्रेटर टू एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा वेरी कर जाएगा. एथिकल चैलेंज है इस चीज के अंदर. राइट डाउन 2-3 लाइंस अबाउट ऑल दीज चैलेंजेस. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू गिव अ सब हेडिंग एंड हैव 2-3 पॉइंट्स इन ईच ऑफ दीज पॉइंट्स. द नेक्स्ट वन, what substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected? Substantial. What substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected? Again, subheading हमको देनी है. Option C. Substantial alternatives and policy interventions for 1, environmental integrity, and 2nd, human dignity. Write the subheading as in the option substantial interventions and policy, substantial alternatives and policy interventions, and then 1 and 2 क्योंकि दो चीज पूछेंगी है, that both this and this are protected. So right, environmental integrity and human dignity. अब इसके अंदर आप लिख सकते हो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, बताओ क्या क्या कर सकते हैं. To protect environmental integrity, what can be done? EIA ठीक है चलो. और ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं? इको टूरिज्म, अच्छा चलो ठीक है, इको टूरिज्म लिख सकते हो. और गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इको टूरिज्म. और क्या कर सकते हो? देखो पूछा है सब्सटैंशियल पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स, कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंट हट के आपको प्रपोज करना पड़ेगा. बताओ क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कर दोगे कि आप कहीं से आसमान में फॉरेस्ट उगा दोगे, ऐसा कुछ रेडिकल नहीं मैं बोल रहा हूँ. बट अगेन इट डिपेंड्स मोर अपॉन द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज इन योर आंसर. सो व्हेन यू राइट, देखो पूछा है सब्सटैंशियल ऑल्टरनेटिव्स क्या है. सो व्हेन यू आर राइटिंग दीज थिंग्स, इट इज मोर अबाउट द एम्फेसिस दैट यू पुट ऑन वर्ड्स. एग्जामिनर मस्ट बी कन्विंस्ड अबाउट दैट वॉट एवर यू आर राइटिंग विद कन्विक्शन. ये मतलब है सब्सटैंशियल वर्ड का. बोलो. I'm sure that is not an alternative, that is something that is being already done. So whenever somebody is doing something as an of this sort, they would not
प्रेफर टू कट मोस्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल हार्म है, तो मिनिमल में हम चाहे मिनिमल ना ही करें लेकिन हाँ फुल हार्म तो नहीं करेंगे. चलो और बताओ. ठीक है. Promote tribal handicrafts. So that would be an economic aspect ki that we can develop some system through which tribal handicrafts are promoted. हाँ मियावाकी बताओ क्या होता है. अर्बन फॉरेस्टिंग. चलो ठीक है. और बोलो क्या बोल रहे थे आप. लॉस एंड डैमेज फंड. हाँ थोड़ा सा हाँ, इस टाइप से हम बता सकते हैं क्योंकि पूछा है पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स आपको कुछ बताने हैं. सो CBDR लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो. सो वन हाँ ग्रीन लाइफस्टाइल अगेन वो लॉन्ग टर्म चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ी सी इनइम्प्लीमेंटेबल चीज़ें हो जाएंगी. इम्प्लीमेंटेबल चीज़ क्या हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रपोज दैट वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फंड दैट functions based on certain parameters. Imagine करो. Again इसको लिखना कम वर्ड्स में है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा वर्ड्स में कर भी दूंगा. You can write it in lesser number of words. There is a fund in which government has to contribute some money. And government contribution to that fund, which is going to be used for, let's say, these purposes, government contribution to that fund depends upon government's performance on environmental protection. Use some objective parameters to evaluate government's performance on environmental protection. कुछ objective parameters हैं कि अगर सरकार ने ये किया तो सरकार को इस फंड में ज़्यादा पैसे डालने पड़ जाएंगे. अगर हम कुछ ऐसा फंड बना सकते हैं जहाँ पे सरकार अकाउंटेबिलिटी आ रही है ना सरकार की यहाँ पे कि नहीं. इफ गवर्नमेंट डज समथिंग लाइक दिस इट विल हैव टू कंट्रीब्यूट मोर इनटू दिस पर्टिकुलर फंड. दैट मीन्स नाउ देयर इज नाउ अ डिसइंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट टू टेक एक्शन that are damaging of the environment or not, because if it damages environment then it has to contribute more into such a fund. समझ पा रहे हो इस चीज को. एक हम इंसेंटिव डिसइंसेंटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी of government entities taking action. If some government entities takes a decision that environment has to get sacrificed because it is going to have some developmental effects. अगर positive effects कम होते हैं और challenges negatives ज़्यादा निकल के आते हैं, you may be personally held liable. Financially, criminally नहीं, financially you will be personally held liable. अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दूं जो डिसीजन मेकर है उसकी, सरकार की डिसीजन मेकर की, अब बताओ डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा. अब आपके ऊपर कॉस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है. द प्रॉब्लम इज व्हाई डज एनवायरमेंट गेट सैक्रिफाइस फॉर डेवलपमेंट. व्हाई डज इट सैक्रिफाइस? बिकॉज अल्टीमेट प्रॉब्लम इज दैट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज आर सोशलाइज्ड. एनवायरमेंटल डैमेज की कॉस्ट कोई पर्सनली बियर कर रहा है, पूरी सोसाइटी बियर कर रही है. सोसाइटी बियर कर रही है. अब जब सोसाइटी बियर कर रही है मेरे एक्शन का कॉन्सिक्वेंस, तो फिर मैं काहे को अच्छा डिसीजन लूंगा. सबको समझ में आ रही है वाली बात. इफ आई टेक अ डिसीजन एंड दैट डिसीजन इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, what has happened is I have now socialized the cost of my action. सबको समझ में आ रही बात. I have socialized the cost or damages because of my action. Because there is no personal cost that I am bearing, I have no disincentive to be careful in taking a decision. As long as costs are socialized, the decision maker would always try to take decisions that are convenient to him. So if we can somehow make the costs more personal, damages more personal, as in the person who is responsible for a decision has to personally bear the cost of that decision, then in that case we can expect better quality of decision. So that is a substantial alternate to policy. कि हम एनवायरमेंट डेवलपमेंट और ह्यूमन डिग्निटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब अगर हम डिसीजन मेकर के लिए कॉस्ट, यही तो अकाउंटेबिलिटी का नाम है. दिस इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज. आई एम गोइंग टू बी हेल्ड पर्सनली अकाउंटेबल फॉर दीज थिंग्स. जब तक मैं एक IAS ऑफिसर हूं और मैं जो भी कर रहा हूं माई लाइफ माई रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं. अब आई कांट डू दैट माई लाइफ माई रूल्स बिकॉज देयर आर रूल्स दैट आई हैव टू अबाइड विद. बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट personally accountable. Why? Because all my actions will have consequences on me to the least. Consequences of my actions are going to be socialized. Society bear करेगी उनके action, मेरे consequences को. अगर अपने action की consequence मैं personally bear करता हूँ, then I would have a great incentive to take right action, right decisions.
So this is the substantial policy alternative that you can suggest कि हम ऐसा कुछ system बना सकते हैं जहाँ पे for example government's performance is evaluated based on certain parameters, and if those parameters become adverse, government has to make more contribution to such funds. The decision makers in such case who take decisions of deforestation, decision makers would be held personally responsible for if their evaluation was not right. Then we can have a system in which people have an incentive to take decisions that are more balanced and they are held accountable for those decisions. This becomes a substantial policy alternative that can be suggested. Apart from that, आप लिखो EIA है, SIA है, इको टूरिज्म है, ये सब चीज़ें लिखो, अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर. Laws will keep a check on that. No, this is not diffusion of responsibility. This is appropriation of responsibility. Contrary है. Government laws will keep a check on this thing. भाई एक law है, सरकार law के against law अगर मेरे ऊपर apply हो सकता है, law सरकार के ऊपर भी तो apply हो सकता है ना. तो अगर सरकार law violate करेगी तो सरकार की ऊपर भी punishment कुछ ना कुछ निकल के आएगी. So there has to be, the point that I'm trying to make is, आप आंसर में लिखो कि हम कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहाँ पे there is a personal accountability of the government or the person who's taking decisions. Then we can have a substantial. Sustainable development का तो केस है ही ये पूरा. मतलब वही तो पूछ रहे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे. ये तो सबको पता ही है और आज से थोड़ा ना पता है, पिछले 50 साल से पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. हो नहीं पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेट पूछे गए हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. In UPSC CSE, current affairs isn't just important, it's the heartbeat of your preparation. But with news pouring in from every direction, multiple sources, and endless formats, it's easy to feel lost. The real challenge? Knowing what to study and what to skip. That's exactly why Vision IS brings you the monthly Current Affairs Revision Program 2026, starting 23rd August, 2 p.m. Across 60 comprehensive classes, available both offline and online, we decode the most relevant national and international news for you, drawing from trusted sources like The Hindu, Indian Express, Economic Times, PIB, Yojana, and more. With expert guidance, personalized mentoring, and rigorous MCQ plus mains-oriented assessments, you'll build a rock-solid grasp over current affairs, streamlining your preparation for prelims, mains, and the interview stage. A stronghold over current affairs isn't optional, it's your way to succeed in UPSC CSE. All right. Subhash's minister is an important minister in the state. अरे ऊपर का पार्ट कहाँ गायब हो गया? यहीं से स्टार्ट है क्या केस? दिखाना. ऊपर 2-3 लाइन थी, मेरे को याद है. चलो मैं पढ़ देता हूँ. Subhash is secretary PWD in state government. He is a senior officer known for his competence, integrity, and dedication to work. He enjoys the trust and confidence of the minister in charge of PWD and program implementation. As a part of his job profile, he is responsible for policy formulation, execution of projects related to infrastructure initiatives in the state. Besides, he oversees technical and administrative aspects related to planning, designing, and construction, etc. So Subhash ji हैं, secretary हैं PWD department के अंदर, and is a senior officer known for his competence and integrity dedication. He has been given multiple responsibilities in this department of PWD. कई सारी responsibilities हैं. Subhash's minister is an important minister in the state. Is an important minister in the state, and significant growth in urban infrastructure development and road network has been registered during his tenure. He is very keen for launching of ambitious road construction project in the near future. Subhash is in regular touch with the minister and is working various modalities of road construction project. Regular meetings, interactions, and presentations are made by him to the minister before formal public announcement of project is made by the minister. So ministers आपको आप regularly meet करते हो, interact करते हो, presentation देते हो, and then the minister makes the announcements public. Subhash's only son Vikas is in real estate business. His son from his own sources is aware that a mega road project is on the anvil and announcement in this regard is expected anytime. He is very keen to know from his father the exact location of the upcoming project. Very keen to know the exact location.
He knows that there would be a quantum jump in prices of land in the vicinity. Buying land at this stage at cheaper price would pay him rich dividends. He is pleading with him, his father, day in and day out to share him the location of the proposed project. He assured him that he would handle the matter discreetly, as it would not attract any adverse notice, as he is in the normal course keeps on buying land and as part of his business. He feels pressurized because of constant pleadings by his son. Another significant aspect of the matter pertained to the extra or undue interest in the above project is by the minister PWD himself. The minister's nephew was also having big infra project company. In fact, minister has also introduced his nephew to him and indicated to him to take care of his nephew's business interest in the forthcoming project. The minister encouraged him to act fast in the matter, as early announcement and execution of mega project would enhance his status in the party and public life. In the above backdrop, Subhash is in a fixed to future course of his action. ठीक है, सबको केस समझ में आ गया? केस तो आसान है, आसान इन द सेंस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और अच्छा केस है, लेकिन समझने में आसान है. ठीक है. Discuss the ethical issues involved in this case. Critically examine options available to Subhash in the above situation. Which of the above would be the most appropriate and why? चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, आंसर करते हैं फटाफट. एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं इस केस के अंदर? मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल इशू क्या है यहां पे? Conflict of interest. Most important ethical issue. Abuse of power. ठीक है, करप्शन है, लेकिन हाँ इनके अंदर करप्शन ऑलरेडी आ रहा है. लिख दो करप्शन अलग से लिखना है तो, लेकिन हाँ करप्शन इनके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. Lack of transparency and accountability. Or you can write this as part of, इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हो integrity or professional integrity or professional commitment to job. So main ethical issues in this case are these ethical issues. ठीक है, clear है? I'm sure सब सारे ethical issues all self explanatory हैं. Conflict of interest क्या होता है बताना जरा? What is conflict of interest? Conflict of interest is when the performance of your public duty may seem to get sacrificed because of some personal interest. Performance of public duty may seem to get sacrificed because of personal interest. Whether it gets sacrificed or not does not matter. Conflict of interest actual भी हो सकता है, potential भी हो सकता है. यहां पे दोनों है, actual भी है, potential भी है. If I am secretary PWD and my son is in this department, is in this business, that means there is a potential conflict of interest. हो सकता है मेरा बेटा जो है वो अपने इंटरेस्ट में वो अपने आप अच्छे बिजनेस डिसीजन लेता हो, लेकिन सामने वाली जनता को क्या लगेगा कि आई एम हेल्पिंग दैट पर्सन, मे बी आई हैव नॉट हेल्प द पर्सन. लिखा है ना उसमें, द सन सेज आई एम गोइंग टू हैंडल द मैटर डिस्क्रीटली. मे बी द सन इज एबल टू हैंडल द मैटर, मे बी आई डोंट रिवील इट टू माई सन, मे बी आई डोंट रिवील, मे बी आई एम एन अपराइट ऑनेस्ट पर्सन, बट स्टिल the Aam Janta is going to feel this way that my son has gotten some benefit, some information from me. So there is not just an actual but a perceived conflict of interest as well. Is it clear? Abuse of power. The minister is abusing his power by asking me to, let's say, divulge information to his nephew. There is an abuse of power over here. Corruption का case है, but हाँ corruption को इसी के अंदर आप include कर सकते हो. Lack of transparency and accountability in performance of duty है. How are government decisions taken? Is government transparent enough to declare what factors went into the consideration? Accountability, if something goes wrong, if there's some corruption, then who is going to be held accountable for the government's decision, for these decisions? Loss of revenue to the public, who is going to be held accountable for that? So lack of accountability, transparency, that becomes an important ethical issue. So ये हमारे main ethical issue हैं. इसके सिवा आप और भी लिखना तो लिख सकते हो, but these are the main ethical issues in this case. Examine the options available to Subhash in the above situation. क्या क्या options हैं? देखो, जब ऑप्शंस लिखोगे ना तो ये मत लिखना ऑप्शन के अंदर, मतलब लिख सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं ऑप्शन लिखने के लिए, बट अवॉइड राइटिंग ऑप्शंस सच एज द फॉलोइंग. अवॉइड, इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन तब तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, बट अवॉइड राइटिंग द फॉलोइंग. अवॉइड राइटिंग दैट Subhash, as in I will divulge the information to the minister's nephew and my son. Avoid writing option like this.
ऑप्शंस दैट आर ब्लेटेंटली रॉन्ग, ब्लेटेंटली अनएथिकल हैं या इलीगल हैं, ऐसे ऑप्शन को लिखना अवॉइड करना चाहिए। अगर दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा है तब तो लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू राइट दीज ऑप्शंस, अदरवाइज अवॉइड राइटिंग दीज ऑप्शंस। ब्लेटेंटली जो बिल्कुल ही इलीगल है, करप्शन वाले हैं, अनएथिकल हैं, ऐसे ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली अवॉइड राइटिंग द फॉलोइंग ऑप्शन, डू नॉट राइट इन द आंसर आई विल रिजाइन इन सच केस। ऐसा मत लिखना कि रिजाइन कर दूंगा मैं, प्रेशर है बच्चे फैमिली से और मिनिस्टर से, आई विल रिजाइन। अगेन नॉट अ वायबल ऑप्शन, व्हाई? बिकॉज इफ यू रिजाइन दैट रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ courage on your part, lack of leadership skills on your part. So don't write such options. Whenever you're writing options, prefer to write less number but good options. ऐसे हमको options लिखने होते हैं, ठीक है? Clear है? Okay. So what are the options that you have? Options that you have are maintain discretion, but give वेग हिंट। समझ में आ गया? गिव वेग हिंट। स्ट्रिक्टली रिफ्यूज, recuse oneself ड्यू टू COI, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। डाइवर्ज तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ हम ये जरूर लिख सकते हैं, मेंटेन सम काइंड ऑफ डिस्क्रिशन बट गिव सम वेग हिंट्स। As in, I would not divulge full details, obviously, but I will, let's say, I don't want to antagonize the minister or the nephew. I don't want to have problems with my family. I will give some vague hints. तो ये एक ऑप्शन हम परस्यू कर सकते हैं। मेरिट डीमेरिट लिख सकते हो इसकी। मेरिट क्या है इसकी? नॉन एंटागनाइजिंग ऑफ द अदर पार्टीज, इसकी मेरिट है। डीमेरिट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी है। कॉग्निटिव डिसोनेंस समझते हो? कॉग्निटिव डिसोनेंस, हाँ? I want to do something, but I'm being forced to do something else. I don't want to divulge information, but I'm being forced to. I'm trying to minimize my क्या नाम उसका, सेल्फ गिल्ट वाली जो चीज़ है यहाँ पे, कि हाँ मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, इस टाइप से मैं कर रहा हूँ। तो मैं एक तरीके से अपनी गिल्ट मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे को फोर्स किया जा रहा है, मैं कर रहा हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस है। आई डोंट वांट टू डू समथिंग बट आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग एल्स। आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज माई गिल्ट इन दिस मैनर। आई एम सेइंग दैट ओके, आई एम नॉट giving you complete information, but I am also giving you some incomplete information. Is this clear? That is one option that you have. Maintain discretion, but give some vague hint. It minimizes, it reduces the conflicts that we have, prevents antagonization of the minister or his nephew, but at the same time, this is an unethical option because any hint, if it leads to them understanding that this is the place, this will come back to me only, as in it would be a breach of my public duty. So इसलिए ये unethical option है. Strictly refuse, this is in fact the best option, but then the negative aspects would be सन वाला पार्ट नहीं लिखना आंसर के अंदर कि बच्चे को नहीं बताया तो उसके बच्चे का फिर फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लिखना अवॉइड करना. अगेन आप लिख सकते हो, मैं रोक नहीं सकता आपका पेन एग्जाम के अंदर, बट अवॉइड राइटिंग सच थिंग दैट इफ आई रिफ्यूज टू माई सन तो फैमिली की प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं, इफ आई रिफ्यूज इन्फॉर्मेशन देन इट मे रिजल्ट इन, ये भी नहीं लिखेंगे मिनिस्टर के साथ लड़ाई हो जाएगी. इट मे रिजल्ट इन मी डिसोबेइंग अ डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्टर. इट मे सैक्रिफाइस द चेन ऑफ कमांड. इट में कॉम्प्रोमाइज द चेन ऑफ कमांड. मिनिस्टर ने कुछ ऑर्डर दिया है एक तरीके से, तो चेन ऑफ कमांड को वॉयलेट कर सकता है. इस तरीके, ये बेटर तरीका है लिखने का. अगर कुछ और नहीं मिले तो लिखो कि मिनिस्टर से क्या लड़ाई हो सकती है, फिर वो मेरे को कुछ गलत काम कुछ बोल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है. अवॉइड करना ये सब चीज़ें लिखना. It will sacrifice the chain of, it will violate the chain of command. I will be in a direct violation of the minister's order. Right? Recuse oneself due to conflict of interest. Try to resolve this situation, as in try to act steadfast to not giving divulging any information. But because there is a potential conflict of interest with son being in this business, I will have to recuse myself. मैं इसके अंदर participate नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे involved है. अगर मैंने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी तब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो देखा ही देखा जाएगा यहाँ पे. अगर इवन इफ आई एम नॉट गिविंग डाइवर्जिंग इन इन्फॉर्मेशन तब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है ही है.
सब लोग फॉलो कर रहे हो इस चीज़ को? सो रिक्यूज वन सेल्फ फ्रॉम गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन. ऑप्शंस अवेलेबल विद दिस पर्सन. Which would be the most appropriate and why? Most appropriate option क्या है यहाँ पे? See, the most appropriate option is to strictly refuse any information. अब हमको यहाँ पे इसको justify करना पड़ेगा. Most appropriate option is to strictly refuse. It's not to recuse. Recusal can be pursued, but only as a matter of last resort. Recuse आप कर सकते हो, लेकिन last resort में करेंगे. Most appropriate action is that you strictly refuse to divulge any information. How would you strictly refuse to divulge information? You will have to communicate clearly to your minister that any information will not be given by me. मंत्री जी अपने आप देते इन्फॉर्मेशन अपने नेफ्यू को, उनको भी तो पता है, मैं उनको प्रेजेंटेशन देता हूँ, उनको भी तो पता है कहाँ से रोड बनने जा रही है, अपने आप देते इन्फॉर्मेशन, मैं क्यों दूँ इन्फॉर्मेशन? आई विल स्ट्रिक्टली रिफ्यूज. अब ये चीज़ कन्विक्शन के साथ लिखनी होती है आंसर में. आई विल स्ट्रिक्टली रिफ्यूज एनी सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑन माई प्रोफेशनल ड्यूटी. I will perform my duty with full integrity, will strictly refuse any divulgence of information to anybody, be it the son or the nephew of the minister. I will have to demonstrate courage in dealing with such difficult situation. Personal courage and professional courage मेरे को दोनों demonstrate करने पड़ेंगे. तो right words matter. Examiner, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जितने लोग आंसर लिखेंगे ना, सब लोग सेम आंसर लिखने वाले हैं, कोई अलग नहीं लिखने वाला आंसर. How will you be given more marks as compared to others? When examiner sees that you have conviction in your option. अगर एग्जामिनर को आपका ऑप्शन पढ़ के ये लगता है यार ये तो पहले दिन बता देगा मिनिस्टर को, आप लिख कुछ रहे हो लेकिन क्या आप जज नहीं कर सकते हो लिखने के बाद? Conviction should be there in your answers, in your language. So make sure that you're writing those words that emphasize, yes, I'm going to be steadfast in these things. I'm going to demonstrate courage in my both personal and professional life and will strictly refuse any divulgence of these confidential information. In fact, I will take steps to transparently declare information to the public as soon as possible. And based on that, those who act earlier, they will be able to benefit. Those who act later, they will not get the benefit. But I will divulge information in a transparent manner to the entire public, not to some people. वो फिर insider trading वाली बात हो जाएगी या फिर conflict of interest वाली बात हो जाएगी. So write these things with conviction in your answer. At the same time, I must also be aware of a potential, लिखना पड़ेगा आंसर में, I must also be aware of the potential conflict of interest that is there with my son. I will, one, discourage my son not to invest in such projects. लिखो आंसर में, I will discourage my son not to invest in such projects, in such road. But as an adult, it is his choice. He can choose to invest. I would make sure that there are proper records that ensure that there was no information divulged from my side to him. Recognize करेंगे आंसर में कि एक potential conflict of interest है. One, लिखेंगे उसके बाद I would discourage my son citing the harm to my professional career and a potential corruption charge or allegation that may come across our way. I will discourage him, I will dissuade him to invest in such a project. Clear है? सबको समझ में आ गया? He is an adult, he can take his own decisions. If he decides to invest, I will make sure that there are proper records available which establish that this conflict of interest was tried to be addressed and I did my best not to divulge any information. I will simply maintain records. इस तरीके से हम इसको conclude कर देंगे आंसर को. That is how you write this answer. बिल्कुल पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है. By doing so, concluding line के अंदर हमको ये लिखना है. By doing so, I would have upheld public trust, performed my duty with full integrity, minimized conflict of interest, showed courage in dealing with difficult situations, especially involving ministers. Write this as a concluding line in your answer. I would have upheld public interest, or I would have upheld public trust, showed courage, performed my duty with full integrity. ये लिखो अपने last line में, concluding line के अंदर. All right, next. Rajesh is a Group A officer with 9 years of service. He is posted as administrative officer in oil public sector undertaking. As an administrative officer, he is responsible for managing and coordinating various administrative tasks to ensure smooth functioning of office. He also manages office supplies, equipment, etc. He is now sufficient senior and is expecting his next promotion in the JAG, Junior Administrative Grade, in the next 1 to 2 years. He knows that promotion is based on examination of ACR, annual confidential report, or performance appraisal of last few years, 5 years.
of an officer by a DPC, Departmental Promotion Committee, and an officer lacking requisite grading of ACRs may not found to be fit for promotion. जिसका ACR में requisite grading नहीं है, उसका promotion नहीं होगा. Consequences of losing promotion may entail financial and reputational loss and setback for career progression. Though he also puts his best efforts in official discharge of his duty, yet he is unsure of assessment by his superior officer. He is now putting extra efforts so that he gets thumping report at the end of financial year. Clear है? समझ में आ गया है? He puts his best efforts in official discharge of duties, yet he is unsure कि भाई सीनियर साहब कैसे असेस करेंगे. अगर इन्होंने अच्छा असेस नहीं किया, रिपोर्ट अच्छी नहीं जाएगी, तो प्रमोशन शायद रुक जाएगा इनका. सीनियर ने अगर अच्छे से असेस नहीं किया. लेकिन अब क्योंकि समय आ रहा है, he is now putting extra efforts so that he gets thumping report at the end of financial year. As an administrative officer, Rajesh is regularly interacting with his immediate boss, who is his reporting officer, writing his ACR. जो boss हैं, वो reporting officer भी हैं, जो उसकी ACR लिखते भी हैं. One day he calls Rajesh and wants him to buy computer-related stationery on priority from a particular vendor. Rajesh instructs his office to initiate action for procuring these items. During the day, the dealing assistant brings an estimate of rupees 35 lakhs covering all stationery items from the same vendor. जो असिस्टेंट है उसने बोला कि एस्टिमेट है लगभग 35 लाख रुपए का, आपको इतने का सामान खरीदना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेंडर, जिनको बॉस ने बोला है. इट इज नोटिस्ड दैट एज पर delegated financial powers as provided in GFR, General Financial Rules, as applicable in that organization, expenditure for office items exceeding 30 lakh rupees requires sanction of next higher authority, that is boss in the present case. अगर 30 लाख से ऊपर का खर्चा करना है तो बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी. एक्सपेंडिचर एस्टिमेट इज ऑफ 35 लाख रुपीज और बॉस ने ही बोला है कि आपको इनसे प्रोक्योर करना है. राजेश knows that immediate superior would expect, important word, would expect that all these purchases should be done at his level and may not appreciate such a lack of initiative on his part. During discussions with the office, he learns that common practice of splitting expenditure, where large order is divided into series of smaller ones, is followed to avoid obtaining sanctions from higher authority. This practice is against the rules and may come to the adverse notice of audit. Rajesh is perturbed. He is unsure of taking decision in this matter. केस क्लियर हो गया. बड़ा ब्यूटीफुली फ्रेम्ड केस है. एज एन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि ऑफिस मैटर्स का केस है, लेकिन हाँ एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान सा केस है. समझ में आ गया केस सबको क्या है. Rajesh is an officer seeking promotion in next few years. Promotion will be based on his ACR, annual confidential report. Report will be written by his boss. Rajesh has to procure stationery. His boss asked to procure stationery from a vendor. Lol, I'm sure everybody understand. Asked to procure stationery from some vendor. Vendor says an estimate of 35 lakh rupees. If the bill is above 30 lakh rupees, it requires approval from the boss, that is Rajesh's boss. राजेश इज नॉट थिंकिंग कि अगर मैं सीनियर के पास जाता हूं तो फिर मेरी ACR के अंदर क्या लिखा जाएगा. सीनियर विल इवैल्यूएट कि बे तो इनिशिएटिव नहीं ले सकता है. और एक कॉमन प्रैक्टिस क्या है, इन एक्सपेंसेस को स्प्लिट कर दो. 35 लाख है, उसको एक काम कर दो, 20 और 15 लाख का एक्सपेंडिचर कर दो, फिर आपको बॉस के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सो दैट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि आप स्प्लिट कर सकते हो. बट दैट प्रैक्टिस इज अगेंस्ट जनरल फाइनेंशियल रूल्स, GFR के अगेंस्ट है वो प्रैक्टिस. आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो उसको, और अगर ऑडिट होगा तो आप पकड़े भी जाओगे. सो नाउ यू आर कंफ्यूज दैट शुड आई स्प्लिट इट or should I go to my boss and ask for his approval? Now that I put it in this way, I'm sure सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है. स्प्लिट कर सकते हो कि नहीं? क्या लिखोगे कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर? आर यू गोइंग टू स्प्लिट और नॉट गोइंग टू स्प्लिट? स्प्लिट करोगे कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं करोगे. लिखना भी मत गलती से इस चीज को. यू आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू स्प्लिट. बट अगेन द पॉइंट इज हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट? हाउ विल जस्टिफाई दैट थिंग? दोनों चीजें आनी चाहिए. पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस एन इंसेंटिव टू डू गुड एंड अ डिसइंसेंटिव नॉट टू डू बैड. दोनों चीजें होनी चाहिए. Both things will provide substantiation to your arguments. Again, one, an incentive to do good. Why should you do something that is right? Why should you do that? And second, why should you not do something that is wrong? दोनों चीजें आपको आंसर में लिखनी पड़ी. That is a complete answer. Why should you do something that is right? क्यों करना चाहिए आपको सही काम? सही काम क्यों करना चाहिए? हाँ? पब्लिक ड्यूटी, मोरालिटी.
ठीक है, पब्लिक ड्यूटी है, इट इज ट्रस्ट ऑफ पीपल in the governance system. That is why you should do what is right. Act according to rules. Rules require you to act in a certain manner. It is your public duty to make sure that public resources are efficiently utilized. There are rules framed by institutions. The institution is superior to any particular person, be it Rajesh or his boss. सबको बात समझ में आ गई है? इंस्टीट्यूशन ने रूल फ्रेम करे हैं, जीएफआर जहां पे लिखा हुआ है, ये किसी पर्सन ने फ्रेम नहीं करे हैं, एक इंस्टीट्यूशन ने फ्रेम करे हैं रूल्स. एंड रूल्स क्लियरली स्टेट दैट यू रिक्वायर अ अप्रूवल ऑफ अ हायर अथॉरिटी. You have to submit to institutional superiority. That is why you have to do something right. Versus why should you not do something which is wrong? लिखा हुआ है केस के अंदर, because if it is wrong, it is certain that it is going to be caught in the audit. The only reason why Rajesh is thinking to do something which is wrong is that he has a fear that this may show lack of initiative and therefore get a negative ASER from him. This is what he expects, number one. Versus what is certain is that if you do this thing which is wrong, he will definitely be caught in the audit. So एक तो आप डर रहे हो कि मैं गलत काम अगर नहीं करता हूं तो फिर शायद मेरे को फायदा नहीं होगा. वर्सेस एक सर्टेनिटी है कि अगर गलत काम करोगे तो नुकसान तो होने ही होने वाला है, ऑडिट में पकड़े भी जाओगे. दैट इज वाई शुड नॉट डू द थिंग दैट इज रॉन्ग. क्लियर टू एवरीबॉडी? सो बोथ पार्ट्स हम कॉन्सेप्ट में जस्टिफाई करने पड़ेंगे. व्हाई टू डू द थिंग विच इज राइट एंड व्हाई नॉट टू डू द थिंग विच इज रॉन्ग. एम्फेसिस इज व्हाट मैटर्स. Rajesh has to act in a right manner. He has to ensure that he takes approval of his boss because the rules dictate so. The rules have been framed by institution and therefore institution's thinking or morality is superior to a person, be it Rajesh or his boss. Further, as a person in charge of using public resources, it is his duty to make sure that public resources are efficiently utilized. This maintains public trust and therefore Rajesh must act in a manner which is right. At the same time, Rajesh's actions, if he tries to split the bill to please his boss, this will definitely be caught in the audit under GFR and therefore Rajesh's ACR, positive or negative, will not matter because now he is going to be accused of corruption. Therefore, there is a great disincentive for Rajesh to act in a manner just before his promotion in a manner which is illegal. Clear to everybody? सबको समझ में आए? क्या कोर्स ऑफ एक्शन हमको लिखना है? लिख सकते हो बाकी वाले पॉइंट्स इसके अंदर. एथिकल इश्यूज क्या हैं लिख सकते हो. कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल क्या क्या है और कैसे हमको करना है लिख सकते हो. आगे बढ़ जाएं इस केस से. ठीक है, बोलो. ही विल हायर अथॉरिटी बॉस है ना, जाना ही पड़ेगा बॉस के पास. अपने आंसर्स में इस चीज को, एक और चीज को अवॉइड करना. जैसे मैंने बोला कि गलत चीज को करना तो हमेशा अवॉइड करना ही है, रेजिग्नेशन भी अवॉइड करना है. सिमिलरली सीनियर के पास जाना. सीनियर के पास हम क्यों जाते हैं बताओ? तुम लोगों को बताया था मैंने कल वाली क्लास में. नहीं, वो गलत रीजन है. व्हाई डू यू गो टू सीनियर्स? हाँ, नो, गलत. तुम तो क्लास में थे, कल भी तुम भी थे, बताया था. Why do you go to senior? You go to senior just under one condition, which is there a precedent for something? Precedent. सीनियर के पास आप जाते हो केवल ये चीज. देखो रूल्स हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना ही करना है. सीनियर नहीं बताएगा आपको कि नहीं रूल को साइड में रखो और मेरे अकॉर्डिंग एक्ट करो. If there is a law, if there are some rules, departmental rules, GFR for example in this case, if there are rules, you will all have to be bound by those rules. चाहे आप हो, चाहे सीनियर हो, चाहे सुपर सीनियर, चाहे बॉस है, चाहे मालिक है ऑर्गेनाइजेशन का, सबको उन रूल्स के अंडर एक्ट करना है. रूल्स हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो आपको एक्ट करना है. यू डोंट गो टू सीनियर टू आस्क फॉर कि क्या कोई रूल है. आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो, यू आर देयर इन अ पोजिशन, यू आर सपोज टू नो द रूल्स दैट एग्जिस्ट. What if there are no rules that exist for something? Then you go to senior and ask, has there been any instance like this earlier and how was that instance resolved? Meaning, is there a precedent for how do we resolve these things? So you go to ask
ये होता है एडवाइस का मतलब. यू गो टू आस्क टू सीनियर अबाउट इज देयर एनी प्रेसिडेंट एंड हेंस वी कैन एक्ट इन दैट मैनर. यू डोंट गो टू आस्क कि मैं गलत काम कर लूँ कि नहीं कर लूँ. ठीक है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए हमको सीनियर वाला पार्ट, अनलेस हम ये लिख रहे हैं कि सीनियर से जाके पूछेंगे क्या ऐसा कुछ प्रेसिडेंट है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया था, उसको कैसे रिजॉल्व किया गया था. ठीक है, क्लियर है, समझ. बोलो क्या पूछना चाह रहे थे. Yes, you are right. Yes, you are right. That is what I meant when I said whatever you are writing must have emphasis. So this is for that emphasis part. That if he conducts something wrong, if not today, tomorrow it will get caught. है कि नहीं? So therefore write this thing कि it is something that goes against GFR. ये लिखा है ना GFR के against है, तो लिखा हुआ है चीज को. It is against GFR and therefore it is bound to be caught in the audit. अब ऑडिट होगा कि नहीं होगा ये आप में लगा सकते हो कि ऑडिट होगा, लेकिन अगर ऑडिट होता है तो पक्का पकड़े जाओगे आप इस चीज़ के अंदर. हेंस यू राइट एम्फेसिस के लिए, यू राइट दिस थिंग दैट इफ ही डज समथिंग रॉन्ग इट विल बी कॉट इन द ऑडिट एंड हेंस वुड रिफ्लेक्ट वेरी पुअरली अपॉन हिज एक्शंस एंड हेंस प्रमोशन इज बाय बाय. अब ये मतलब बाय बाय मतलब राइट दिस थिंग्स. ठीक है, गेट दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी. बोलो अदर ऑप्शन इन द सेंस. ये अगेन एज आई सेड, whenever you're writing options, don't think of writing more number of options. Write less number of quality options. So the options that you have are basically two. One, to split the expense as has been the practice. Merit demerit लिख सकते हो. Or to go by the rules strictly and take the approval of senior, that is the boss. ये दो option है हमारे पास, और कोई option नहीं है. और क्या लगता है आपको तीसरा option क्या है? There are no other options. Don't write that okay. कुछ इसमें इनोवेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कुछ कि मैं अभी एक काम करूंगा कि अभी मैं 30 लाख का बिल बनाऊंगा और अगली वाले बाद में 15 लाख का कर दूंगा मैं, और आई विल डेफर द पेमेंट्स टू सम लेटर बिल. दीज आर नॉट द ऑप्शन दैट आर. डायलेमा पूछा है तो आप डायलेमा को एड्रेस करो ना, जबरदस्ती कुछ नई चीज़ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, बोलो क्या कर, कौन बोला. यस, वाई विल बॉस रिमूव. बॉस कौन तो रिमूव करने वाला. बॉस की घर की खेती है क्या डिपार्टमेंट. यही सोच भी और यही चीज भी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर आप डर के आंसर, यही तो कन्विक्शन का मतलब है, अगर आप डर के आंसर लिख रहे हो अपने वर्ड्स के अंदर कि आपके वर्ड्स में दिख रहा है एग्जामिनर को कि इसको डर लगा हुआ है कि बॉस मेरे को रिमूव कर देगा, ACR में क्या लिखे. अब बार बार यू आर राइटिंग दिस थिंग इन योर आंसर दैट ओके दिस विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन माय ACR बट आई एम डन, आई एम ओके विद दैट. You are not okay with that. That is why you're writing that thing again and again. This is where conviction comes in. You have to ध्यान रखना इस चीज के बारे में. अब समय थोड़ा कम है इसलिए मैं ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ. केस स्टडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड आई विल टॉक अबाउट दिस इन योर क्लासेस इन अ फ्यू डेज. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इन केस स्टडीज इज यू डोंट हैव टू बी थ्रेटन्ड. अपनी पावर को पहचानो. होता कौन है बॉस तुमको कुछ बोलने वाला. भाई सीनियर ही तो है, तुम्हारे से 2 बैच सीनियर 4 बैच सीनियर है. अपनी पावर को पहचानो आप क्या पावर है. ही कांट आस्क. मिनिस्टर है, होता कौन है का मतलब ये नहीं कि आप लड़ने लग जाओगे उस पर्सन से. यू हैव टू ऑल वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, राइट. बट अंडरस्टैंड दैट नोबडी कैन लेट्स से पॉइंट अ गन टू योर हेड एंड से डू समथिंग रॉन्ग. अंडरस्टैंड व्हाट पावर you have, understand what protections you have with you, and then based on that you have to take action with conviction. This is the most important thing that you can learn to write answer in your case, to write case studies answer. Whatever you write, write that with conviction. डर के नहीं लिखना है हमको कुछ भी चीज लिखनी है तो. ठीक है, ओके. NREGA, earlier known as MGNREGA, earlier NREGA, provides right to work. Launched in 2006. Main objective of program is to give legal guarantee of wage employment to help members of rural households who are willing to do unskilled manual work, subject to maximum of 100 days of per year per household. Every rural household has right to register under scheme. Job card is issued to registered. Job card holder can seek employment. State government shall pay 25% of minimum wage for the first 30 days or compensatory daily unemployment allowance to the families and of wages of remaining period of day, ... You have been appointed as administrator in charge of district. You have been given responsibility of monitoring MGNREGA work undertaken by various Gram Panchayats. You are also given authority to give technical assistance to all NREGA works. In one of the panchayats in your jurisdiction, you notice that your predecessor has mismanaged the program in terms of, आपके जो predecessor थे उन्होंने program का mismanage किया in terms of money not dispersed to actual job seekers,
muster rolls of laborers not properly maintained, mismatch between work done and payments made to fictitious persons, job cards were given without looking into need of person, mismanagement of funds and to the extent of siphoning of funds, approved works that never existed. तो ये आपने चीजें नोटिस करी हैं. What is your reaction to above situation and how do you restore the proper functioning of NREGA program in this regard? I'll be very quick in discussing the answer. What action would you initiate to solve various issues listed above? How would you deal with the above situation? तो आपको ये बताया गया है कि आप नरेगा के अब इंचार्ज बन गए हो और आपने आके नोटिस किया है कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं. द पर्सन हु वाज देयर बिफोर यू हैज कॉज्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स. व्हाट इज योर रिएक्शन? रिएक्शन पूछा गया आपसे कि क्या रिएक्शन है आपकी. ये नहीं लिखना रिएक्शन इज दैट आई एम फीलिंग वेरी एंग्री अबाउट दिस. What is your reaction to the above situation and how do you restore the proper functioning of MGNREGA program in this regard? As an officer entrusted with, as an officer of the state entrusted with upholding public trust, my first reaction would be that the current actions have diluted the trust of public in the governance system. And therefore, my actions would be to restore this public trust. Is it clear? That is how you begin your answer. As an officer of the state, people's representative entrusted with a particular responsibility, my first reaction is that these actions sacrifice or compromise trust of public in the government, and hence my first action would be to ensure ये जो पब्लिक ट्रस्ट का घड़ा खाली हो गया है, ये पब्लिक ट्रस्ट वापस से रीफिल हो जाता है. दैट इज व्हाट माय एक्शन इज गोइंग टू बी. The above actions seek of mismanagement of public funds, non-performance of public duty, and not being held accountable for one's actions. And therefore, my actions would be to restore all these elements to make sure people start trusting the governance system again. Clear है? ये first part है. Second, what actions would you initiate to solve the various issues listed above? क्या actions हम लेंगे इन issues को solve करने के लिए? आंसर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक एक पॉइंट लिखो और इनके रिस्पेक्ट में एक्शन जो आप लोगे सबके पॉइंट में एक्शन लिखो. मनी नॉट डिस्पर्स टू एक्चुअल जॉब सीकर्स. I will make sure that all bank accounts are Aadhaar card seeded and I have got biometrics of everybody to make sure that money is given directly to the people's account. Muster rolls not properly maintained, have biometrics, make sure that all the people in the area who are registered, there is a proper identification of those people who are everybody who's seeking job. Mismatch between work done and payment made, I will initiate social audits for this thing. Payments made to fictitious persons, I will try to find out I will find out the trail of money, and I will try to recover the money made to all these fictitious persons. I will ask the banks to freeze these bank accounts and will initiate an inquiry to recover the money from these accounts. Job cards were given without looking into the need of the person. This is something that will be done by Gram Sabha. Gram Sabha को हम बोलेंगे कि भाई आप job cards देते समय accountability अपनी exercise करो. Make sure that you are giving job cards to only those people who are the needy ones first, not to everybody. Mismanagement of funds and to external siphoning of funds, इसका आंसर सेम है. Payments made to fictitious person, again इसमें थोड़ा सा और elaborate करके लिख देना. Mismanaging of funds, have social audit, perform commercial audit also of the funds, as in money कहाँ पे जाता है. Approved works that never existed, again this is again social audit. आपको ensure करना है कि work जो हुए हैं वो कहाँ चले गए हैं. So make sure that you are preparing a proper report of the corruption that exists. This is what you do. How would you deal with the above situation? कैसे हम deal करेंगे? Again ये तो हो गया क्या actions लेंगे इनके respect में, and how do you deal with the situation? Situation का मतलब क्या है? Collectively ये सब चीजें क्या हैं? Actions to solve the various issues, ये एक एक के against action है. और अब how would you deal with situation? अब collectively हम क्या action लेंगे इनके against? What action would you take collectively? First and foremost, I will make sure that I am going to revisit the entire scheme in my area. I am going to start from scratch, including identification of needy workers, preparation of their muster rolls, linking of their bank accounts, and empowering the Gram Sabha to identify and delegate the works properly. I will build trust with Gram Sabha and the people, carry out activities जैसे social audit वाली activity है, advertisement वाली activity है.
will transparently declare क्या क्या काम हुए हैं ऑन लेट्स से द पंचायत भवन, वहाँ पे मैं बताऊंगा भाई इस एरिया में ये काम हुए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने लिख दिया कि भैया यहाँ पे कैनाल बनाई गई है, कैनाल है ही नहीं वहाँ पे, तो आई विल बी ट्रांसमिट डिक्लेयरिंग ऑल द वर्क दैट वी डू इन अ पब्लिक मैनर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हाँ, यही तो ट्रांसपेरेंसी, ये तो है, ये ट्रांसपेरेंसी है। हम डिक्लेयर कर रहे हैं प्रॉपर्ली कि हमने क्या क्या काम किया है। पंचायत भवन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, रेगुलर ऑडिट करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑडिट होगा, सोशल ऑडिट होगा, कमर्शियल ऑडिट होगा। वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज ऑडिट्स, वी आर गोइंग टू बी हेल्ड, बट आई विल एंश्योर दैट people have that जन सुनवाई हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल people have that power that they can raise their voice regularly regarding any kind of misuse of funds or non giving of job cards, to do these things. Last, Ashok is a divisional commissioner in one of the border districts of Northeast state. A few years back, military has taken over the neighboring country after overthrowing the elected civil government. Civil war situation is prevailing in the country, especially in last 2 years. However, internal situation further deteriorated due to rebel groups taking over the control of certain populated areas near own border. Due to intense fight between military and rebel groups, civilian casualties has increased manifold in recent past. In the meantime, in one night, Ashok got information from local police regarding guarding the border checkpost that there are about 200 to 250 people, mainly women and children, trying to cross over to our side of the border. There are also about 10 soldiers with their weapons in military uniform, part of his group, who wants to cross over. Women and children are also crying and begging for help. A few of them are injured and bleeding profusely, need immediate medical care. Ashok tried to contact Home Secretary of the state but failed to do so due to poor connectivity, mainly due to inclement weather. Clear है? So you are, आप बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप डिविजनल कमिश्नर हो, और क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हो तो आपके पास एडिशनल पावर्स भी हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड दिस इज अ वेरी पेक्यूलर केस दैट देयर आर पीपल नॉकिंग एट द कंट्रीज बॉर्डर begging for help, women and children, because of civil war in the region, neighboring country has intensified. There are some soldiers also with weapons in military uniform. Point is, you are being asked to give them some kind of shelter. ठीक है, ये केस है. Options available: ethical, legal dilemmas. Option do you think would be most appropriate? What are extra precautionary measures that to be taken by border guarding police in dealing with soldier in uniform? Most questions मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हो, बट हाँ, क्या करना है इस केस में फटाफट आपको ये बताता हूँ. What is it that you are going to do? Options available समझ सकते हो, या तो आने दोगे या फिर रोक दोगे. बेसिकली ये ऑप्शन है आपके पास. व्हेन यू आर राइटिंग कि हम आने देंगे, दैट वी आर गोइंग टू अलाउ पीपल टू कम इनटू द कंट्री, मेक श्योर यू आर नॉट सेइंग कि भाई हाँ हम आने देंगे, केवल यहाँ पे नहीं हमको रुकना है. वी विल अलाउ देम टू एंटर बट ओनली इनसाइड अ रेफ्यूजी कैंप वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, टू मेक श्योर दैट दे आर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड they are not going to as in get lost in the general population. We have to make sure that कि आप इस तरीके से लिख रहे हो. अगर आने दे रहे हैं वाला पार्ट लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो. We are going to stop them at the border because we don't allow any kind of refugees in the country, and unless there is a political will, political direction, we can't allow them into the country. So you have to write these two options. ये basically दो options आपके पास हैं. What will you do? How will you write? Important things to mention in the answer. India is not a signatory to 1951 refugee conventions or its 1967 refugee protocol. लिखना पड़ेगा आंसर में, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 51 कन्वेंशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग इट्स 67 प्रोटोकॉल. हम सिग्नेटरी नहीं है उसके. एंड बिकॉज वी आर नॉट सिग्नेटरी, वन, वी डू नॉट हैव एन ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रिफ्यूजी, एंड वी डू नॉट हैव एन ऑफिशियल रिफ्यूजी लॉ और अ पॉलिसी. Our country allows refugees only on a case by case basis. Even though we don't have a refugee law, फिर भी हमने कई refugees को allow कर रखा है कंट्री के अंदर. In fact, India is among the largest host of refugees in the world. So even though we don't have a refugee policy, but we still allow refugees on a case by case basis. This case over here present a humanitarian cause. And hence, considering the precedent, I may be tempted to take action to allow the people inside the country, but with proper documentation of each person and make sure that they are as close to the border as possible. तो हमको ये कुछ वर्ड्स इनका आपने आंसर में लिखने पड़ेंगे. 51 की रिफ्यूजी पॉलिसी, 67 की कन्वेंशन, 51 की जो कन्वेंशन है, 67 की जो हमारी प्रोटोकॉल है. इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू एनी वन ऑफ देम. वी डोंट हैव अ रिफ्यूजी लॉ इन द कंट्री. वन, एक और वर्ड लिखना पड़ेगा आपको आंसर में, नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल. सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड नॉन रिफॉर्मेंट प्रिंसिपल सेवरल टाइम्स. नॉन रिफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? हम कोई आ जाएगा उसको वापस नहीं भेजेंगे. हम कोई आ जाता है उसको हम वापस नहीं भेजते हैं. सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप वापस नहीं भेज सकते हो. इन द सेंस ये नहीं कि भाई आ गए उसके बाद आपने वापस उनको भेज दिया जाके जैसे वापस जाके मर जाए. वी हैव अ नॉन रिफॉर्मेंट प्रिंसिपल इन प्लेस इन द कंट्री. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये कुछ वर्ड्स हमको लिखने हैं आंसर के अंदर.
इफ यू वांट टू राइट कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे उनको कंट्री के अंदर, अगेन आप उसका जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो दैट refugees into the country, there are lot of risks because of them. There are security risks, plus the country is not as economically well off as some other Western countries. So we have limited resources to feed our population. Also, we can't afford to divert our resources to the, let's say, people who are being prosecuted in the other countries. On a humanitarian basis, we may be tempted to allow, but taking a long-term view of the health of the nation, we may want to restrict them at the border. This will involve two aspects. We can allow them, but only just inside the border so that they don't face any immediate harm. Allow them, but only just inside the border. हमारी टेरिटरी में आ जाएंगे तब कोई उनको मारेगा तो मतलब हमारे ऊपर अटैक है. Allowed them, but only just inside the territory, which minimizes the harm that they present face, danger that they are facing presently. At the same time, we are going to make sure, we will make sure that we get adequate resources from UNHCR to ensure that these refugees are taken care of using international funds and as less as possible domestic funds. Again, you want to write, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो कि हम उनको अलाउ कर देंगे कैसे करेंगे या फिर अलाउ नहीं करेंगे कैसे करेंगे, आपके ऊपर है आप कैसे लिख रहे हो. दोनों केस में मेरे ख्याल से लिखना तो यही चाहिए कि अगर अलाउ कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, कम से कम बॉर्डर के अंदर तो आपको आने देना पड़ेगा उनको. ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, आपको आने देना पड़ेगा. उसके बाद आप कैसे डील करते हो थोड़ा सा डिफर कर जाता है. You can emphasize more on the humanitarian nature, वो एक emphasis हो सकता है. You can emphasize on the economic resource nature. Again, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. Point is justification आपका proper होना चाहिए. Both are right. You must be able to emphasize. You must be able to properly justify what are the course of action you are taking. That is what you should be doing. ठीक है? Clear है? चलो. With this, I'll end the class. It's 7 o'clock already. Smriti ma'am would be here. तो देखते हैं सेशन तुम्हारा अब कब तक चलता है. I started at around 5:35 के आसपास तक मैंने स्टार्ट किया था. चलो